What is the thermal radiation? It is the process in which heat transfer without material medium, like radiation from sun in the form of electromagnetic wave. Okay, the process in which heat transfers without the material medium in the form of electromagnetic waves. Form of electromagnetic waves. Okay. And it is a quick process. It is a quick process. Okay. So the process in which heat transfers without the material medium in the form of what? Electromagnetic wave. Okay. And it is a very quick process. Thermal conduction, I told you, it is a very small process or slow process part of relation, whereas thermal radiation is a very quick process. Like say, the light takes almost like approximately 8 minutes to travel 15,000 crores of distance from the earth to your sun. Okay, in the form of both electric and as well as of your magnetic field. This will be the electromagnetic wave. Like this. One is electric field, another one is a magnetic field. Okay, sure. Next slide. Properties of thermal radiation. Properties of thermal radiation. First one, madam. I told you it can propagate through the vacuum with the speed of almost like the speed of your light. Okay. Thermal radiation can propagate through vacuum with speed of light. What is speed of light, beta? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Moves in straight line. That means it obeys your rectilinear propagation of light. Okay. Thermal radiations can propagate through vacuum with the speed of what, beta? Light. That is 3 into 10 to the power of 8 and moves in your straight line. It is always obeying your rectilinear propagation of a light, beta. And it also obeys the properties of light like refraction and as well as of a reflection, beta. Okay. Obeys all the properties of light. All the properties of light like reflection, refraction, so on. Done, beta? Next one. Wavelength of 800 nanometer to 4 lakh nanometer. It belongs to infrared region. It belongs to your infrared region. Important point, beta.
What is the wavelength of your infrared region? Means it is your 800 nanometer to 4 lakh nanometer. Visible light is from your what beta? What is the visible light wavelength range? 400 nanometer to your 750 or 700 nanometer. Or 4000 angstroms to your 7000 angstroms. Fourth point. It obeys inverse square law. That is, intensity is inversely proportional to square of the distance. Intensity is inversely proportional to square of your distance. Like say if this is a source, the light which is coming from this one. Okay, somewhere at this point, which is a distance d. Here the intensity will be inversely proportional to square of the distance. More the distance, lesser will be the intensity. Clear? So how do you define generally intensity, beta? Intensity is equals to your energy emitted per unit area per unit time. Energy emitted per unit area per unit time. Very important formula. Intensity is equals to energy emitted by your area into your time. Okay, and it will base your inverse square law. It means mathematically, if I am writing, I is equals to energy. Here I am representing by letter Q divided by area A into your T. This area by T will represent me what beta? Power. So it is also equal to your power divided by area. Okay, so intensity is also equal to your P divided by your A. Intensity is equals to your P divided by A, or intensity is equals to your Q divided by area into your time. So for point source, if I'm writing for point source or the sources which is at larger distance, intensity will be equal to your area of the point source will be equal to pi into your r square, because if this is a point source, the radiation goes in all the directions like this. So if I draw a circle from this one, so as the radius increases, intensity decreases. So intensity for a point source will be equal to your P divided by your pi r square. Clear, beta? Can anyone tell me the units for this one? कोई यूनिट्स बता सकता है इसका? Can you tell me the units? Power is measured in watt. This will be your watt per area is meter square, isn't it? So watt per meter square will be the condition. Okay, sure. And one very important point with a note. According to reversed theory, all substances above 0 degrees centigrade can emit radiation. All the bodies which are above 0 degrees centigrade, sorry, Kelvin, not degree centigrade. It is your 0 Kelvin, absolute temperature. Okay, absolute temperature. So according to reversed theory, all the substances above 0 Kelvin can emit the radiation. Even our body emits the radiations. Our body also emits the radiation, except for the absolute temperature, यानी जिसका temperature 0 degree से या उसके कम है, it will not emit any radiation. But every other body which is above, it may be a human body, it may be an object body which is having
life or which doesn't have the life, like stones, this all will emit the radiations if they are above your 0 degrees. Clear? So intensity is equals to power by your area. Clear? Sure. Next heading. Reflectance, comma, absorptance, and transmittance. Next heading is reflectance, absorptance, and transmittance. देखो बेटा, इसको समझने का एक छोटा आसान सा तरीका है. मान के चलो कोई पॉलिटिशियन को ले लो, लाइक से ही इज सम पॉलिटिशियन जनरली जो अपने को समझ में आता है. मान के चलो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम सोसाइटी ही गेट सम 500 crores. अब आपको तो मालूम है पॉलिटिशियन का हाल क्या रहता है. जैसे उसको 500 करोड़ रुपए मिले तो क्या करेगा, उसमें से 100 करोड़ रुपए अपने बैंक में डाल लेगा, स्विस बैंक वगैरह जो भी उसमें चले जाएगा, और उसमें से और एक 200 करोड़ रुपए या मान के चलो 300 करोड़ रुपए ही विल गिव इट फॉर इट्स पार्टी फंड, इजंट इट. और बचा कितना अब अपने पास 400 तो यही हो गए, बचा कितना 100 करोड़ क्या करेगा, पब्लिक के काम पे लगाएगा. ठीक है ना. यानी वो पहले ऑब्जर्व कर रहा है वो पैसे को, और थोड़े पैसे को ट्रांसफर कर रहा है फॉर द पार्टी फंड, और थोड़ा फिर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है लोगों को बताने के लिए, चलो फिर इतना पैसा से हम लोग ने काम किया. सो ये तो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, और ट्रांसमिट भी कर रहा है साइमल्टेनियसली. तो एनर्जी क्या हो रही है, इट इज गेटिंग बाइफोकेटेड पार्ट, इजंट इट. समझ में आई बात, समझ में सभी को. अर्शिया क्या हुआ बेटा? अर्शिया, फातिमा, चलो. सो रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस बेटा. सो क्या होता है बेसिकली, अगर कोई भी एक पॉलिटिशियन है, अगर उसको 500 करोड़ रुपए एक एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिला गवर्नमेंट से, तो उसमें क्या करेगा, थोड़ा तो अपना पैसा अपने बैंक में डालेगा, स्विस बैंक में जाएगा, और बाकी का मान के चलो 300 करोड़ रुपए उसने पार्टी फंड को दे दिया, और बाकी का मान के चलो 100 करोड़ रुपए पब्लिक के लिए काम देना, रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली. पहले तो अपने आप में ट्रांसफर कर ले रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व मतलब 100% ऑब्जर्व कर लिया, 300 करोड़ रुपए फिर वापस दे दिया पार्टी फंड को, और बचा कितना 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए फिर वापस दे दिया पब्लिक, इज इट. सो दिस आर नोन एज रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस. यानी 100 करोड़ जो है ना, ये अब्जॉर्प्टेंस के नीचे आता है बेसिकली, isn't it? So this will come under your absorptance. ये absorptance के नीचे आता, ये transmittance के नीचे आता, ये reflection के लिए आता. बस आपको समझने के लिए बोला, अदरवाइज यानी जो एनर्जी सन से अपने बॉडी पे पड़ रही है, ये 3 प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाता है बेटा. ओके ना. मान के चलो मेरे पास कोई एक बॉडी है ऐसा, ओके. अब इसके ऊपर जैसी एनर्जी गिरी, ये हो गया क्यू, उसमें से क्या हो जाएगा, थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ऑब्जर्व कर लेगा, ओके, एंड थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करेगा, और उसके बाद थोड़ी एनर्जी ये ट्रांसमिट करेगा. ओके. तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है क्यू ए, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्यू आर एनर्जी, और ये ट्रांसमिट कर रहा है क्यू टी. ठीक है. सो व्हाट इज क्यू आई? क्यू आई इज योर इंसिडेंट एनर्जी. कहां पर है क्यू आई? ये वाला. ठीक है. उसके बाद क्यू आर इज रिफ्लेक्टेड
एनर्जी। उसके बाद क्यू ए इज योर observed energy, or qt is your transmitted energy. Okay, so qi is your incident energy, qr is your reflected energy, qa is observed energy, and qt is your transmitted energy. So I can say that by conservation of energy, क्योंकि अपन को मालूम है एनर्जी कैन neither be created not be destroyed, it can be transmitted from one form to your another form. So total energy incident will be equal to your energy reflected plus energy observed plus energy transmitted. ठीक है, so qi is equals to your qr plus of your qa. क्लियर है? देखो एक छोटा सा टर्म लिखना है, अगर मैं पूरे इक्वेशन को qi से डिवाइड कर रहा हूँ, series qi divided by your qi is equals to qr divided by your qi plus qa divided by your qi plus qt divided by your qi. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? ये कैंसिल हो गया, so this will come out for me your 1. So this will be equal to your qr divided by your qa. Okay, qr divided by your qi is known as of your reflectance beta. I am representing it by your r. This is your ea and this is your t. So r plus a plus t is equals to your 1. यहाँ पर लिख देता हूँ. What does that mean? R is known as of your energy of reflected divided by your energy of observance. So there is incidence. QR divided by QI is known as of your absorptance or absorptive power. और इसको हम लोग absorptivity भी बोलते हैं. ठीक है, यानी reflected energy by incident energy. डन बेटा. उसी तरह से ये is equals to your QA divided by QI, observed energy by your total energy. This one is known as of your QR ने ना बेटा, R लिखा ना, सॉरी, इसको R के लिए हम लोग रिफ्लेक्टेंस लिखेंगे, ये के लिए अब्जॉर्प्टेंस लिखेंगे, सॉरी, R के लिए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेंस, ये के लिए अब्जॉर्प्टिविटी, अब्जॉर्प्टिविटी लिखो या अब्जॉर्प्टेंस या अब्जॉर्प्टेंस पावर. ठीक है, दिस आर द डिफरेंट नेम्स गिवन फॉर दैट. उसी तरह से टी क्या है बेटा? टी इज इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय एनर्जी अब्जॉर्ब्ड is known as of your transmittance, is known as transmittance. Clear? So T is equals to your QT divided by your QI, and A is equals to your QA divided by QI, and R is equals to your QR divided by your QI. Very important bit. Very, very important. And it is based on law of conservation of your energy. This is a very important point you need to remember. So by the energy conservation, total energy which is been incident on a body will be equal to sum of your reflectance, sum of your absorptions, and sum of your transmittance. Okay, so A plus R plus T will be equal to how much for me? 1. So it is your absorptive power divide plus reflectance or reflectivity or plus transmittance will be equal to your 1. A plus R plus T will be equal to your 1. Clear beta?
ठीक है बेटा, चलो इसका आंसर बताइए। अगर ट्रांसमिटेंस 0 हो गया बेटा, then r plus a will be equal to 1, or else a is equals to 1 minus r लिख सकता हूँ, isn't it? See here, अगर observance more हुआ, अगर observance बहुत ज्यादा है, then reflectance will be less, or if observance is less, reflectance is more from this relation. A is equals to 1 minus of your r. क्लियर है? उसी तरह से अगर कोई बॉडी का रिफ्लेक्टेंस 0 है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, अगर r की वैल्यू 0 हो गई इसके अंदर, isn't it? So what will be the value of a बेटा in this one? अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो a will be equal to your 1. a will be equal to 1, यानी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ही रहेगा इसके अंदर. कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, लाइक परफेक्ट ब्लैक बॉडी. परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ना ट्रांसमिटेंस है ना रिफ्लेक्शन है बेटा. ओके, सो इसके ऊपर हम लोग किर्चॉफ लॉस बात करते हैं ब्लैक बॉडी के लिए. जितना वो ऑब्जर्व करेगा उतना ही वो एमिट भी करेगा. सो ऑल द पार्टिकल, ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स हैव बीन प्रेजेंट इन दिस वन बेटा. ओके, it is given by your किर्चॉफ्स लॉ. तो किर्चॉफ लॉ के अंदर हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज समथिंग विच ऑब्जर्व्स. जितना वो ऑब्जर्व करती है उतना वो एमिट करती है, यानी रेडिएट. ठीक है, एंड ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन दिस वन. all possible wavelength radiations are possible. Okay, now see, who is a perfect black body beta? I can say sun. Sun is perfect black body, क्योंकि वो जितना ऑब्जर्व करेगा उतना एमिट भी करेगा. So whatever is an absorption, that will be your एमिशन ऑल्सो. एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ट्रांसमिटेंस 0 हो गया और रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया, देन ए की वैल्यू कितनी बन रही है बेटा? ए वैल्यू इज बिकमिंग 1. अगर ए वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्या? इट इज योर कंप्लीट ऑब्जर्प्शन के नीचे आएगा, या परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसके अंदर, जो हम लोग किर्चॉफ लॉ के अंदर पढ़ेंगे. किर्चॉफ लॉ के अंदर हम लोग ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, which says that whatever it is observing, it will be emitting that much amount of energy, and all possible wavelength radiations have been present in this one. ठीक है, and sun is what? Perfect black body. Sun is your perfect black body. Okay, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताइए. A black body does not, first option, emit radiation. Emit radiation. Number 2, observe radiation. Observe radiation. Number 3, reflect radiation. Reflect radiation. And fourth one, refract radiation. Multiple आंसर देंगे, कोई बताएगा आंसर? A black body does not emit the radiation, observes the radiation, reflect the radiation, or refract the radiation. क्या हो सकता है बताओ? A black body does not reflect the radiation. Third भी हो सकता है, isn't it? And refract radiation, refract भी नहीं होगा. जितना वो emit radiation करेगा उतना वो observe भी करेगा. Does not बोला है ना बेटा? Does not बोला है तो third और fourth दोनों भी आते हैं. ठीक है,
क्लियर है? हाँ, डज नॉट रिफ्लेक्ट एंड डज नॉट रिफ्रैक्ट। चलो और एक क्वेश्चन कर लीजिए, समझ के दीजिए आंसर इसका। An ideal black body, an ideal black body, an ideal black body मतलब ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 at room temperature, at room temperature is thrown into furnace, thrown into furnace. So it is observed that, first option, initially it is the darkest and at latter times it becomes your brightest. First option. Second option is it is the darkest body. It is the darkest body and later times, darkest body at all times. Okay. And the third option is, समझ के बताइए, it cannot be distinguished, it cannot be distinguished at all times, at all times. Fourth one, initially it is the darkest body and at later times cannot be distinguished. चलो बोलो जरा कोई। An ideal black body, an ideal black body मतलब ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 ना, उसमें ट्रांसमिटेंस होता है, टी वैल्यू 0 होती है और आर वैल्यू 0 होती है, यानी जितना वो ऑब्जर्व करेगा उतना वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। अगर इनिशियली पूरा डार्क है देन लेटर पूरा ब्राइट बन जाएगा। वेरी गुड। सो इनिशियली इट इज द डार्केस्ट क्योंकि पूरा ऑब्जर्व कर लिया और लेटर टाइम्स वो रिफ्लेक्ट, वो ट्रांसमिट भी कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, सर नॉट ट्रांसमिट, रेडिएट कर रहा है। सो रेडिएट कर रहा है मतलब क्या? ब्राइटेस्ट, जितना ऑब्जर्व करेगा उतना वो रेडिएट भी करेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस साहब ने क्या बोला? मतलब कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो देख लीजिए यहाँ पर मान के चले ये बॉडी है, बॉडी थोड़ी एनर्जी रेडिएट कर रही है ना, मान के चलो एक टेम्परेचर टी के पास है, इजंट इट, और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो इट इज एमिटिंग सर्टेन एनर्जी, it is emitting certain energy in all the directions, so it is emitting certain energy in all the radiations. अब स्टीफन साहब ने क्या बोला कि एनर्जी इज इक्वल्स टू योर, अपने को मालूम है कि E इज इक्वल्स टू योर, E इज इक्वल्स टू योर इंटेंसिटी लिख रहे हैं या एमिसिविटी और एमिशंस बोलते हैं, E इज इक्वल्स टू योर Q डिवाइडेड बाय योर T into your A. He told that this energy emittance is directly proportional to your T to the power of 4. Mathematical derivation अपने को नहीं है बेटा, you just remember that energy
emitted per unit area per unit time is directly proportional to your t to the power of your 4. t to the power of 4, t क्या होता है बेटा? Absolute temperature. Absolute temperature यानी energy is directly proportional to t to the power of 4. Removing this proportionality constant, we get E is equals to sigma into t power 4. ये हो गया energy का formula as per the Stephen's law. So E is equals to your sigma into t power 4. Sigma is your constant beta. Sigma is your Stephen's constant. Stephen's constant. और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 5.67 इंटू 10 to the power of -8. यूनिट हो जाएगा जॉल पर, एरिया विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर. एनर्जी लिख रहे हैं ना बेटा. सो टेम्परेचर भी आ जाएगा इसके अंदर राइट नाउ. कितना आ जाएगा बेटा? एनर्जी इज इक्वल स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू योर एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जॉल इनटू एरिया बोला तो कितना आएगा देखो जल्दी से. टेम्परेचर नीचे चले जाएगा, जॉल पर मीटर यानी क्यू बन जाएगा ये. एंड टी मतलब के टू द पावर ऑफ योर 4. ठीक है. या वॉट आई कैन राइट वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर ऑफ 4, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है बेटा. चलो. सो E इज इक्वल टू कितना है अपने को? सिग्मा टी टू द पावर ऑफ 4. सिग्मा इज अ स्टीफेंस कांस्टेंट और इसका यूनिट हो गया जॉल मीटर क्यूब केल्विन टू द पावर ऑफ योर 4. ठीक है. एनी डाउट? ठीक है. चलो इसको हम लोग थोड़ा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं. देखो E क्या होता है बेटा? Q डिवाइडेड बाय योर A into your T, that is equals to your sigma T to the power of 4. यानी Q by T is equals to sigma A T to the power of 4. Okay, so Q by T भी लिख सकते हैं, या Q is equals to sigma A T into T to the power of 4. और इसमें से Q by T can be written as of your power. Power is equals to sigma A T to the power of 4. Okay, and this formula is applicable only for your perfect black body beta. Sigma P is equals to sigma T to the power of 4, or Q by T is equals to sigma T to the power of 4, or Q is equals to sigma A T to the power of your 4. Okay, so this is for what? Perfect black body. For perfect black body. ठीक है. And what is A beta? A is your surface area, यानी जितने सरफेस से एनर्जी रेडिएट हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है, जितना एरिया ऑब्जर्व कर रहा है उसका सरफेस एरिया ही लेंगे बस अपन. ठीक है बेटा. इज इट क्लियर? चलो आप लोग का आज एग्जाम भी है, तो स्टॉपिंग है राइट नाउ. अगली क्लास में हम लोग ऑफलाइन कर लेंगे. छोटा ही डेफिनेशन पढ़ा है, सो ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हाँ, नोट्स में भेज देता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम. ठीक है. टेक केयर बेटा, बाय.